आ गया। देख अपने को पहला वाला शायद देख के करना पड़ेगा, नहीं आता है। वो वाला छोड़ दे फिलहाल के लिए, रुक जा। ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक जा। ठीक है ठीक है। कुछ छोटा कर देता हूँ। Describe substantial procedure the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate evidence in relation to supplier statement reconciliation of Hawthron and Co. एक एक करके जाएंगे, तू पहले बता। Review the supplier statement and reconcile with the GRN good receive note. Okay. Okay. Review if supplier statement reconciliations were performed by a responsible official and not an unauthorized authority. Next goal. Review the post-year and bank statement for any payments made to a supplier. Review supplier statements that review supplier statement reconciliations that they were performed on a monthly basis. Monthly basis, okay. राहुल बेसिक पे खेलना। Calculate the amount paid to the supplier with the sales invoice, with the Very good. purchase invoice. Sorry, purchase Purchase invoice. invoice. Purchase invoice. Review if disclosures were made in accordance with the local legislation and accounting standards. Okay. No, Appropriate that बेसिक पे खेल ले, बेसिक पे खेल ले। डिस्क्लोजर के पहले कौन सा पॉइंट आता है? डिस्क्लोजर के पहले कौन सा पॉइंट आता है? review the obtain a written representation from the management confirming the balance. बराबर। सप्लायर स्टेटमेंट्स के लिए मैं और क्या करूंगा? रिव्यू अभी एक काम कर लेते हैं। मैं तो बोल रहा कि रिव्यू इंडिविजुअल सप्लायर लिस्ट एंड वेरीफाइड द ये क्या बोलते हैं, रिव्यू एंड वेरीफाइड द सप्लायर टोटल सप्लायर स्टेटमेंट्स। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसके अभी अपन पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सप्लायर स्टेटमेंट। Hawthron Enterprises who reviews monthly statements from its main suppliers, and although these have been retained, none have been reconciled to the payables ledger. So इतना अभी पता है कि reconciliation should take place to the payables ledger. So review if supplier statement reconciliations are being made against payable ledgers. Check Review if that the the DV reconcile has been taken. Check that the reconcile has been done on the monthly basis. वो बोला मैंने। ठीक है, बोला तूने। The engagement partners are the audit senior to recommend the procedure to perform such. Discuss with the management what are their initiatives, what initiatives they have taken in performing supplier statement reconciliations. And discuss the management that why they have not reconciled the statement. Reconcile, हाँ बराबर, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अभी आंसर देख लेते हैं। Let a representative sample of year-end supplier statements and agree to the balance of the payable ledger of Hawthron if balance। अपन परफॉर्म रिकंसिलिएशन बोल रहे थे, अपन परफॉर्म कर रहे थे, नहीं अब अपने वाली सिलेक्ट करना है सैंपल ऑफ सप्लायर स्टेटमेंट एंड एग्री balance the payable ledger of Hawthron. If balances agree, then no further work is required. सही है? क्या कर रहा है? ये नहीं बस बस आगे बढ़े। Where differences occur due to invoice in transit, confirm the goods received note where receipt of goods was pre-year end. If so, confirm that receipt is included in the year end accruals.
ठीक है। Where differences occur due to cash in transit from Hawthron to the supplier, confirm the cash book and bank statements and that the cash was sent pre-year end. Where difference occur due to the cash in transit from Hawthron to the supplier to confirm from the cash and bank statement that the cash was sent per year and the cash was sent per year. The cash was sent. Discuss any further adjusting items with the payables ledger supervisor to understand the nature of reconciling items and whether it has been correctly accounted for and whether it has been Accounted. Discuss any further adjusting items with the nature of reconciled item. It has been correctly accounted. Discuss with the further adjusting item with the trade items payable that have ledger been supply. found as unreconciling items or reconciling items, whether they have been correctly accounted for. Correctly accounted for. Correctly इसको तो कम से कम अगर 3-4 बार नहीं निकालोगे तो जब तक याद नहीं रहेगा मेरे को। ओके इतना नहीं है, सोच मत देख। देखो बेसिक पे क्लास सर ने भी क्या बोला, कुछ कॉमन पॉइंट्स बना के रखो तो चेपते जाओ, वही है बेसिक पॉइंट्स बनाने हैं। ये रेडी थे बट वो बोलते ना एकदम जब प्रेशराइज किया तो थोड़ा वो हुआ। कोई नहीं यार, कंपेयर शेड्यूल रिटन रिप्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सही है। पोस्ट ईयर एंड, सही है। आगे बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ हैवथ्रॉन। बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ हैवथ्रॉन तो पता ही है। बैंक रिकंसिलिएशन तो कैसे करेगा, बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक कंफर्मेशन लेटर ना। हाँ, और कैश वाला बैंक क्या कैश वाला कैसा कैश बुक टू द प्री ईयर एंड कैश और द करंट ईयर एंड कैश। agree the balance agree the reconcile balance as per the cash book to the year pre-year and cash book. प्री एंड कैश बुक वो दो हो गए। फिर वो वाला एक पॉइंट है ना, cash book and compare the cash book and the bank balance to compare if there is an unusual transaction which impacting huge amount which creates a window dressing. ठीक है, तूने एक पॉइंट बोला, अब मुझे भी बोलना था। अभी देख जब भी रिकंसिलिएशंस आएंगे, एक है कि चेंजेस होंगे। So if there are any bank reconciliation differences found, then discuss with the management whether they have given the proper accounting treatment for the same। बराबर है, बोल दूंगा। ठीक है, फिर agree the obtain a written representation from the management agreeing the bank balance as per is accurate or it is complete। मेरा फ्रेम सही हो रहा है क्या थोड़ा, मतलब किससे, मतलब कंपेयर मतलब किससे बोल रहा है तू? कंपेयर से मैं पूछना चाहता हूँ, कंपेयर मतलब किससे कंपेयर? अरे नहीं कंपेयर पर कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि कैलकुलेटर तूने कंप्लीटनेस बोला। नहीं obtain a written representation from the management to assess the bank balance as per the final statement। अरे वो था ना यार, क्लोजिंग फिगर बोलना, तो बोलना क्लोजिंग फिगर ऑफ बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, परफेक्ट है, सही है। इंक्रीज कट ऑफ टेस्टिंग, नहीं लास्ट वाला क्या पॉइंट बोला? सिर्फ क्लोजिंग फिगर, मैं सिर्फ क्लोजिंग फिगर बोला, जो तू बोला मैं उसका क्लोजिंग फिगर बोला और कुछ नहीं बोला। क्लोजिंग फिगर, क्लोजिंग और लोकलाइजेशन तो आ ही जाएगा। एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अरे अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है, अच्छा वो वाला ही बोलना है क्या? अनप्रेजेंटेड फिर वो examine if any old unpresented check has to be written back as it can't be it is not valid for presentation। During last year's audit of Hawthron Enterprises Co. Bank and Cash, significant cut-off errors were discovered with a number of post-year-end checks. Okay, so review if post-year-end checks have been processed correctly in the current year, this is the prior year, to reduce the payables. The finance director has assured the audit engagement partner that this error has not occurred
again this year. The bank reconciliation is comprehensively audited. Review if the bank reconciliation has been comprehensively audited. पता नहीं, अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे, चेक कर दें. Check one point. Check the for the current year for the current account. Check that the bank reconciliation is compared with the bank confirmation letter. वो तो बोला ना, बैंक स्टेटमेंट्स एंड बैंक कंफर्मेशन लेटर. बोला क्या बोला? दोनों एक ही एक मिनट पॉइंट में, वो सबसे पहले आया था बुक के जैसे. अच्छा, सम का नाम क्या था वैसे? नाम हैवथ्रॉन. चाहिए, चल आगे बढ़ता हूँ मैं. Obtain Hawthron bank account reconciliation and cast to check additions to ensure arithmetical accuracy. Agree the balance as per the bank reconciliation to the original. Agree to obtain Hawthron bank account reconciliation casts to check additions to ensure arithmetical accuracy. Ensure balance as per bank reconciliation to the original year-end bank statement. The bank confirmation letter. Agree the bank reconciliation. Agree to the cash reconciliation balance for the cash book to the year-end cash book. Cash book to the year-end cash book. Trace all, अरे outstanding lodgements नहीं बोला देख. Trace all outstanding amounts to the pre-year-end cash book, post-year-end cash book, and paying in slips. बराबर है. Also to paying in book, नहीं paying in book year pre-year-end. ठीक है. Trace all unpresent. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दे तू. आउटस्टैंडिंग देख, ट्रेस ऑल आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स मतलब आउटस्टैंडिंग पैसा टू द कैश बुक और द पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट्स. इतना बोलेगा तो भी बहुत है. ट्रेस ऑल अनप्रेजेंटेड चेक्स थ्रू द प्री ईयर एंड कैश बुक एंड पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट. For any unusual amounts or significant delays, or obtain explanations from the management. Examine any old unpresented checks and assess if they need to be written back to the payable ledger as they are no longer valid. Oh, there are valid point sahi tha. Examine any old unpresented checks to assess if they need to be written back to the payable ledger as they are no longer valid. Examine the. इसका मतलब क्या था वैसे? अगर मतलब नहीं समझा. सपोज कि तूने कोई ओल्ड मतलब पुराना चेक जो तो बना हुआ भी डाल रहा है, ऑफकोर्स वो वैलिड नहीं है. एक पर्टिकुलर टाइम रहता है चेक का, और अगर डालो नहीं तो तुम उसका पेमेंट क्या बोलते हैं, तो उसको पेबल लेजर में फिर से ऐड कर देगा यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज क्यों ऐड करेगा, क्यों वैलिड ही नहीं है इसका जो पेमेंट पीरियड था, तो उसके बाद उसको डिपॉजिट करेगा. ठीक है. हाँ, पेबल पेमेंट के बाद मैंने किया डिपॉजिट, तो वो पेबल लेजर में रिटर्न बैक टू द पेबल्स लेजर. रिटर्न बैक मतलब उसको अमाउंट वापस से डाल दो, क्योंकि खेलने में लग रहा था 20,000. तूने तूने चेक डाल दिया, बट तूने चेक डाला ही नहीं, पास ही नहीं हुआ आगे. तूने कम कर दिया ना यहाँ पे, वापस बढ़ाना होगा कि भाई उससे पैसा अब तक पे नहीं किया. Okay. Examine all represented checks because now they are no longer valid. Write them back to the payables ledger. पेबल लेजर. ठीक है. थैंक्स. सही है, आगे बढ़ जाते हैं. कितना बेटा रिसीवेबल्स आ जाएगा मुझे लगता है. अभी रिसीवेबल्स है, सर नहीं मारना. तेरा सेकंड टाइम हो रहा है ना पूरा, मतलब पूरा ये मेरा लास्ट सेक्शन. हाँ, ये मेरा सेकंड टाइम है. बराबर. सही है यार नजर मत लगा देना यार, बस नजर मत लगा देना कोई भी. आ गया चला क्या 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 बोला तूने, क्या बोला? ए भाई, क्या चैट में कुछ लिख रहा है क्या? हाँ ना, तो मुंडी तो हिला. हाँ,
जल्दी कर यार, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। लड़कियां मारती हैं भाई, आखिरी वक्त तक खड़े, आखिरी वक्त तक खड़े रहने दो। ब्रदर बॉयज, अच्छा अच्छा, ब्रदर बॉय, फिर ऐसा बोलना, फिर ठीक है। रिव्यू एज रिसीवेबल लेजर, मतलब वो रिसीवेबल्स का है, तो बस एक बार ऊपर से घुमाने के लिए मैं आया हूँ, डिस्कस नहीं करते, आता है अभी। रिव्यू एज रिसीवेबल लेजर टू एडवाइस स्लो मूविंग और ओल्ड अच्छा मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन। बोलूँगा, हाँ मैं पढ़ता हूँ, तेरा तो रिवाइज हो ही रहा। Review the age receivable ledger to identify any slow moving or old receivable balance. Discuss the status to this the balance with the credit controller to access whether are likely to be paid. Select a significant sample of receivables and review whether there are any other date cash receipts. Ensure आफ्टर। that a sample of slow moving after date cash receipt to ensure that the flowing receipt or old receivable balance is also selected. ठीक है. Review customer corresponding to identify any balance with which are in dispute or are unlikely to be paid. Review board minutes to identify whether there are any significant concern in relation to the payments by customer. Calculate the average receivable collection period and compare this to prior year. Investigate any significant difference. Inspect post-year and sales return and credit note and consider whether an allowance, additional allowance against receivable is required. Select a sample of good dispatch note before and just after the year and to follow up through a receivable ledger to ensure they are recorded in the correct accounting period. Select a sample of year-end receivables balance and agree back to the valid supported documents from GDN. सही है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ वाला अच्छा मैं तो। एक वो वाला कैसे रख ले कि हम लोग कंफर्मेशन लेटर वी सेंड कंफर्मेशन लेटर टू कस्टमर फॉर फॉलो अप परफॉर्म फॉर नॉन परफॉर्म रिप्लाई रिसीवेबल, परफॉर्म रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन बोलना चाहिए, परफॉर्म रिसीवेबल। सर्कुलराइजेशन Agree back to the valid support and documentation of GDN इसको पूरा फ्रेम कर to ensure existence। परफॉर्म एक मिनट रुक जाए। परफॉर्म परफॉर्म रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन फॉर द करंट पीरियड, मैं इतना ही बोलूंगा। अच्छा आगे वो नहीं बोला कि टू टेक अ नॉन रिप्लाई फ्रॉम द कस्टमर द बैलेंस है ओके नहीं मैं फॉर्म नहीं, एक्चुअली मैं करेक्ट बाकी के देख, उधर 4 या 5 ही पॉइंट में, तो मैं तो 7 8 बराबर लिख के आ रहा हूँ, तो प्लस सर्कुलराइजेशन। भाई हाँ सर्कुलराइजेशन हर कोई लिखता नहीं है, लोगों को तो स्पेलिंग भी नहीं आती, मैं लिख रहा हूँ वही। मैम मैम क्या वो सुपरवाइजर के लिए कि भाभा इसने लिखा है शायद। Select a sample of year and receivable balances and agree back to the valid supporting documentation of GDN and sales order to ensure existence। यार ठीक है, सही है क्या समझ में नहीं आया ये क्या बोलना चाहते हैं, मतलब ठीक है, वो एग्जिस्टेंस चेक चेक कर रहे हैं खाली उनका कि बराबर है। अच्छा देखो डिस्प्ले हो रहा हाँ सर्क्यूलर आए, एक मिनट रुक जा, गलत ही लिखा है। रुक जा बताता हूँ, तू भी लिख के आ सकता है। ये सी आई सर्क्यूलराइजेशन, आई होप यही स्पेलिंग हो। है यही है क्या? सर्क्यूलराइजेशन सर्क्यूलराइजेशन। ठीक है आराम से आराम मेरी बातों का फालतू मुझे साहिबा। हाँ आजा, अभी सुन, ये एक सम आया है। Identify and explain 4 assertion relevant to class of transactions and events for the year-end audit। ठीक है, अब मेरे को ये समझा नहीं, ठीक है कि मेरे को जेन्युइनली नहीं समझा था जब ये पहली बार मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि ऐसे वो बोलना है कंट्रोल एंड कंट्रोल एक्टिविटीज के बारे में, बट नीचे भी फिर मैंने पढ़ा कि ये इसी ए में ही पार्ट 1 और 2 में आया है। तो देखो उन्होंने क्या बोला, फॉर ईच identified assertions describe substantive assertion procedure relevant to audit of revenue। तो मुझे क्लिक होगा कि ठीक है, ये तो वो है occurrence, existence, completeness, और रीजन नहीं आता completeness उसमें, रीजन नहीं आता, cut off verifying
कट ऑफ, वेरीफाइंग, कट ऑफ कट ऑफ, ऑथराइजेशन, तो ये वो सब है। तो पहले अपन कंप्लीटनेस के लिए बोलते हैं कि कंप्लीटनेस के तो एक बोलना है रेवेन्यू का। कंप्लीटनेस को तो क्या बोलेगा? क्या तो कंप्लीटनेस क्या होता है? टू वेरीफाई द होल दैट द कंप्लीट ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड। आई डोंट रिमेम्बर, जनरली उतना ज्यादा याद नहीं आ रहा। मैं रेवेन्यू के लिए कंप्लीटनेस में बोलूंगा review post year and review if any post year and sales have been made and whether they will and what and whether they will be included in the revenue of the current year. ओके ओके, इसमें अकरनेस भी बोल सकते हैं ना रेवेन्यू में? अकरनेस इज लाइक, और भी बोल, हाँ बता। occurrence. ओके, इज लाइक रिव्यू द प्री ईयर एंड कैश, नहीं सॉरी, प्री ईयर एंड sales invoice and check with the GRN to GDN. check the accuracy. G तूने आज सर के सामने भी GRN बोला था, मेरे को लगा सर उधर इधर को पेल देगा। GDN है वो। हमने क्या किया? GDN sales invoice compared to and check the GDN for the occurrence of revenue for the current year. कैसा था ये? इंग्लिश तो सही था, बट वो अकरेंस में आएगा या नहीं आएगा, मतलब वो शायद वेरिफिकेशन में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने बोला छोड़ दिया था। बट मे बी यू आर राइट ऑल्सो, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ। कट ठीक ऑफ है, कर तो ठीक है, वही ठीक है, है। review pre-year end sales invoices and just after year end sales invoices to match if they are being recorded in the correct period. वो कट ऑफ के लिए, वो तो इजी है। करेक्ट पीरियड वाला हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। ये दो हो गए। कंप्लीटनेस के लिए शायद मैंने बराबर ही बोला है। वेरिफिकेशन कैसे होगा? सिलेक्ट द वेरीफाई सैंपल और करना टेस्ट रहता है, तो ऑफ मैंने आ बोला ना कि तूने जो बोला ना अभी, वो शायद वेरीफाई रहता है, वेरीफाइंग एक्यूरेसी रहता है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि वही कि verify if the goods dispatch, if the quantity recorded in the goods dispatch note and the value in the goods dispatch note in the same as in the sales invoice, because any differences should then be discussed with the management. चल ठीक है, आगे देखते हैं अपन। देख ही लेते हैं, क्या ये है? तो अच्छे से आ ही नहीं रहा, रॉन्ग हाँ देंगे फालतू में। ये एक्चुअली completeness का वही है, all transactions and events should be recorded, should have been recorded, मतलब have been recorded completely, or should have been recorded, have been recorded. Occurrence, the transactional events have recorded and have actually occurred and pertain the entity. ये देखा, select a sample of sales transactions recorded in the sales day book, agree the details back to the goods dispatch note and customer order, review monthly breakdown of the sales per key product, compare the prior year and budget, and investigate significant differences. So, एक मिनट बस। Select a sample of sales transaction recorded in the sales day book. Select a sales, sample of sales transaction recorded in the sales day book and agree the detail back to the GDN for good dispatch note and customer order. तीन चीज लेंगे हम, sales order, sales day book, GDN, customer order. Review the monthly breakdown of sales per order, per product compared to the prior year and budgeted, and investigate any significant difference. ठीक है। मैं अगर तो ये बोल दूंगा कि review customer, एक मिनट ना, review correspondence from external customer to identify none of the customers recorded in the sales system were fictitious. For sample of customers, शायद ये बोल वो दूंगा, आई मे थिंक बी सो एग्जिस्टेंट का हो जाएगा ना, वो एग्जिस्टेंट का हो है ही जाएगा। नहीं, एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आई डोंट, एक मिनट मेरे को पता नहीं है, नहीं, बट मैं तेरे को बस बोल रहा हूँ। निशा नहीं है। होता ही नहीं है एग्जिस्टेंस। नहीं एग्जिस्टेंट। और एक्यूरेसी है एक्चुअली, सो अपन ने जो पॉइंट बोला वो एक्यूरेसी में आ सकता है। अमाउंट एंड अदर डेटा रिलेटेड टू रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड एप्रोप्रिएटली।
Select a sample of sale invoice and recalculate the totals and calculations and sales tax are correct. For sample of sales invoices, confirm the sales price stated and agree to the authorized person. Select a sample of sales invoice and recalculate. The sales tax are correct. For sample of sales invoice, confirm the sales price related to the authorization list. Select a sample of Select a sample of GDM price during the year. Agree to the sales invoice and that they have recorded in the sales table. Review the total amount of sales and compare it to the prior year and budgeted and investigate any significant difference. ये वाला एक मिनट समझा नहीं ना कंप्लीट इस तरीके से ये वाला क्योंकि सर ने आज बोला ना कि जितना जा रहा है उतने जाए तो लास्ट के 10 दिन बाकी है, कुछ नया मत डालो। मैं कट ऑफ वगैरह का ये देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन और ये जहाँ ये क्वेश्चन के लिए मेरे को 4 assertions and relevant class of transactions बोलना था। 4 assertions and relevant class of transactions में आधे क्या क्या है राहुल? completeness, occurrence, accuracy, presentation, classification. presentation मैं भी लिख के देता हूँ यार। एक बार क्वेश्चन लिखा उन्होंने क्या बोला क्या है। अच्छा, जो बाय द वे जो हम अभी लिख रहे हैं वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं ना सिर्फ? हाँ हाँ हाँ, मैं भी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन ही लिख रहा हूँ। बता इसको वैसे बोलते क्या है? सिर्फ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई और फिगर आउट। अरे देख, तू जब भी तू टेस्ट ऑफ कंट्रोल या तू डेफिशिएंसी जब तू करता है ना, तू यही सब करता है। मतलब ये क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस ही तू करता है एक्चुअली। बस तेरे को पता नहीं क्योंकि तूने एक्चुअली प्रैक्टिकली इन सेंस तूने केस स्टडी सॉल्व किए हैं, तो तेरे को थ्योरी पता नहीं है। अदिति को थ्योरी मतलब मालूम है सारा शायद। ब्रेक बोला तूने, क्या बोला? मैंने बोला कि अदिति को शायद थ्योरी मालूम रहेगा इस सब का। अब अपने को थ्योरी नहीं मालूम क्योंकि अपन ने केस स्टडी सारे किए हुए हैं ना यार। डायरेक्ट केस स्टडीज किए। अच्छा भी है वो चीज ना नहीं। अच्छा, जो सोल्यूशन पाया था। हाँ हाँ हाँ, अपन सारे गो थ्रू करेंगे एक बार, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। अकरेंस, कंप्लीटनेस एंड खाली ऊपर का हेड पॉइंट लिख रहा है ना, अकरेंस कट ऑफ के अंदर का वो भी लिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, अंदर वाले के मैं करूंगा क्या? वो सब तो सेल्स के करेगा भी क्या? अरे मैंने अभी देखना हवे में बोला कि whether all the transactions have been recorded completely, whether all the transactions have occurred actually in the period or in the entity. उसके बाद accuracy, the amounts or other data relating to required transaction events have been recorded appropriately, accurately बोल। फिर cut off, transactions and event have been recorded in the correct accounting period. ये तो अभी अपने को पता है thanks to Sahil and all. नहीं, एक्चुअली अपन ने केस स्टडी किया तो सब कवर हो चुका है। अभी कट ऑफ होगा तो ऑटोमेटिकली तेरे मुंह से ना पहले एक प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड निकलता है। एक्यूरेसी के लिए तेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड निकलता है। नीचे जब मैंने ये पढ़ा ना सब्सटेंशियल प्रोसीजर, मेरे मुंह से आया कट ऑफ, कंप्लीटनेस। हाँ, एक्यूरेसी वाला नहीं आया क्योंकि उतना पता नहीं। आगे क्लासिफिकेशन, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर प्रॉपरली। एक काम करना, पेंसिल से क्लासिफिकेशन का जरा लिख दे क्योंकि ये थोड़ा बेसिक भी है और वो ना सिंपल में अपन गंदा कर देंगे ऐसा ना हो। हाँ, Presentation, transactions and events appropriately aggregated, disaggregated are clearly described and related
disclosure and relevant transaction. Okay, and relevant, understandable in the context of applicable financial reporting framework. Okay, nice. मतलब वो अपना ये जो है ना Transaction events. प्रेजेंटेशन, ये मतलब अपना डिस्क्लोजर्स की तरह है. Obtain a breakdown of the revenue Okay. by account code and cash to ensure accuracy. Agree the breakdown of the revenue disclosed in the financial statements to the revenue account codes with nominal ledger. Revenue account codes और उन्होंने बोला है. ठीक है. Okay. एक minute. Transaction events are appropriately aggregated and disaggregated and clearly described, and related disclosure are relevant and understandable in the context of applicable reporting framework. Obtain a breakdown of revenue about You code think and तेरे लिए cash. important है तो लिख दे. मैं ये सब तो याद नहीं रखता हूँ, मैं खाली ऊपर का याद रखता हूँ. ब्रेकडाउन ऑफ रेवेन्यू डिस्क्राइब इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू. इजी है, बट ओनली लैंग्वेज. क्या बोला था आपस में एक्सप्लेन कर. प्रेजेंटेशन के बारे में. रुक जा. एक मिनट ना. ये देख, ये मैंने लिखा हुआ है. तेरे को दिखते हैं ऐसे नहीं? ये मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ बराबर. अभी ये देखा, पहला कौन सा है? अकरेंस पे हाथ है ना मेरा. Review if all the transactions have actually occurred in the have actually occurred in the entity statements or have actually occurred in the books of the entity. Next, the classification. Review if all the transactions have been classified into the proper accounts. Accuracy. Proper accounts. Review. हाँ, review या फिर एक मिनट, मैं हर बार review बोल रहा हूँ, मैं बस एक पहला वाला वर्ड देखने दे. वैसे ये ठीक है. All transactions have been recorded accurately with the correct mathematical check or with the correct mathematical treatment. Okay. Completeness. Whether all the transactions that have occurred have been recorded completely or fully. इन्होंने लिखा है have been recorded, have been recorded. अभी ये as a joke शायद मुझे याद रह भी जाए. Have been recorded. भाई ये joke है. Have been recorded, have been recorded. ऐसा मेरे को शायद याद रह भी जाए. रिकॉर्ड किया. ठीक है. प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा है, बाद में लिखूंगा. कट ऑफ have been recorded in the correct period. अगेन मैं आता हूँ प्रेजेंटेशन पे. लास्ट 1 मिनट बाकी है, तो प्रेजेंटेशन पे जब मैं आता हूँ मैं बोलूंगा if all the transactions disclosures have been given in the company's books. Are relevant and understandable in the company's books. मैं ये लिख दूंगा. तो ये मेरा शॉर्टकट होगा, क्योंकि लास्ट 10 दिन में इतना बाहर तो नहीं होगा. सेम लिंक.